Good morning, guys. Today I will start new chapter, that is chapter number 4, organizing organization of data. It is very important chapter because from this chapter we know the basic concept of statistics. Question arise: why we organize the data? When an investigator collect data for an investigation, these are just raw data. Raw data are not capable of offering any meaningful conclusion. मतलब ये कि जो भी इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है वो रॉ डेटा होता है और उस डेटा से हम विदाउट एनालिसिस और क्लासिफिकेशन हम उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन of the data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. यानी ऑर्गेनाइजेशन डाटा का मतलब ये है कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उस डाटा को हम इस तरह क्लासिफाई कर लें कि वी कैन कंपेयर द सिमिलर टाइप ऑफ मास डाटा और उसको हम फैसिलिटेट कर लें जिससे कि उस डेटा को वी कैन यूज इट इजीली. An important method of organization data is to distribute these into different classes on the basis of their characteristics. This process is called classification of data. यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम डाटा को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में या क्लासेस में जिससे कि हम उस डेटा को यूज कर सकें. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? We can say that to make the raw data meaningful, these must be classified on the basis of their different characteristics, such as educated family, uneducated family, rich family, and poor family. Is called classification of data. And when we classify the data in different कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इनकम से रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है. इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. नाउ व्हाई वी क्लासिफाई द डाटा? इट मीन्स what is the objectives, what are the objectives of classification? First, brief and simple. Main objective of classification of data is to present data in the form of appears to be brief and simple. Because raw data से we cannot conclude any decision. So we made the classification. For simple presentation of data, it is the first objective of classification. Second, utility. Classification enhances utility of the data as it brings out similar within the diverse set of data. It means we can use this data by utility. और एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कितने तरह के लोग होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंशिएट होता है, वी नो फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. थर्ड, डिस्टिंक्टिवनेस.
Distinctiveness means classification render obvious difference among the data more distinctly. जो भी डेटा है उसका बारीक से बारीक एनालिसिस कर सकें, उनमें अंतर कर सकें, डिस्टिंक्टनेस मीन्स अंतर कर सकें, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। फोर्थ ऑब्जेक्ट कंपेरेबिलिटी। विदाउट क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट कंपेयर द डाटा। पिछले साल और इस साल मान लीजिए हमने 2 साल लगातार डाटा को कलेक्ट किया, तो विदाउट क्लासिफिकेशन हम रॉ डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, साइंटिफिक अरेंजमेंट। Classification facilitates arrangement of data in a scientific manner which increase their reliability. डेटा को हम लोग साइंटिफिक अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं जिससे कि डाटा की रिलायबिलिटी बढ़ सके। लास्ट वन, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन makes data more attractive and effective. We can use diagrams, we can use chart, we can use table. So it looks more attractive and effective. These are the major object of the classification of data. Now, what are the characteristics of a good classification? यानी जब आप क्लासिफिकेशन करें किसी डाटा को तो कौन कौन सी चीजें आपको उसमें देखनी होगी। फर्स्ट, comprehensiveness. Classification of data should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. यानी जब भी हम क्लासिफिकेशन करें तो जितने भी डाटा हैं वो सारे के सारे डाटा हमारे क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट इंक्लूड हो जाए, कुछ छूट जाएंगे, तो इट इज नॉट कॉल्ड ए गुड क्लासिफिकेशन। Second, clarity. Classification of raw data into class should be absolutely clear and simple. जो भी क्लासिफिकेशन करें वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि केवल उसे स्पेसिफिक पर्सन ही देख सके या स्किल्ड पर्सन ही देख सके। सिंपल होना चाहिए, एनी पर्सन कैन सी इट एंड ऑब्जर्व इट। थर्ड, homogeneity. All item in a group or class must be homogeneous or similar to each other. जिस भी तरह से आप क्लासिफिकेशन करें, जितने क्लासिफिकेशन करें, तो इन्हें ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन देयर शुड बी होमोजेनिटी। अगर अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके लिए आप अलग ग्रुप बना लें, लेकिन जो भी ग्रुप बनाए एक ग्रुप में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ, suitability. The composition of all the classes must suit the objective of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of a student in a school, their classification on the basis of weight and marital status would make no sense. कहने का मतलब, जिस ऑब्जेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट किया है उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आप उसका क्लासिफिकेशन करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्टूडेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जो डेटा कलेक्ट किया है उससे आप यदि उसके वेट और मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लें तो द मेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। So suitability is must for a good classification. Fifth, stability. A particular kind of investigation should be based on the same set of classification. This base should not be changed with each investigator. Stability का मतलब जितने भी इन्वेस्टिगेटर हैं उन सब के डाटा को एक ही फॉर्मेट में क्लासिफाई किया जाए। इस तरह नहीं कि 10 इन्वेस्टिगेटर ने आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और 10 के 10 इन्वेस्टिगेटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस से करें। तो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड
classification. Now, what are the basis of classifications? हम क्लासिफिकेशन करें तो कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है? There are four type of basis of classifications. First, geographical. Second, chronological. Third, quantitative. And third, qualitative. And fourth, quantitative or numericals. These are the four main basis of क्लासिफिकेशन. यानी हम किसी भी रॉ डेटा को इन चार मेथड से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का means when we present the data by places, geographical places, that is called geographical classification. In other words, we can say this classification of data is based on geographical or location differences of the data. For example, you can see the table. In this table, the data relates to different states and number of firms. So we should classify this data by geographical classification. In one column we write the place, and in another column we write the number of firm. In place Punjab, number of firm 30, Haryana, number of firm 20, UP, number of firm 20. We can also present this data in a bar diagram. As I told you that the object of classification should be attractive and effective. For attractive and effective, we can make the bar diagram like this example. So I think first it is clear, when we classify the data on the basis of geographical or location, it is called geographical classification of data. Now second, chronological data. When data are classified on the basis of time, it is called chronological classification. You can see from table 2 how we classify the data in a chronological way. There are the information given in years sales of a firm during 2017 to 2019. When we present this data year wise, it is called chronological classification. Now third, qualitative classification. In qualitative means क्वालिटी के आधार पर यदि हम किसी भी डाटा की क्वालिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, that is called qualitative classification. So we can say this classification is according to quality or attributes of the data. For example, the data may be classified on the basis of occupation, religion, level of intelligence, or population. We can say like this. This classification may be two type. First, simple classification, and another manifold classification. It is called classification according to dichotomy. This is because data are divided on the basis of existence or absence of equality. For example, male, female, healthy, unhealthy, educated, uneducated are the example of simple classification. यानी हम सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, यानी केवल एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर और उन दोनों के डेटा को कलेक्ट करें, इट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन. एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 20 हैं, कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर लें.
कितनों के मार्क्स 60% के ऊपर हैं, कितनों के 60% के नीचे हैं, ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन. Manifold classification, if we classify the data in various characteristics, that is called manifold classification. For example, when classification according to quality of data involves more than one characteristics, is called manifold classification or multiple classification. You can see from this, from following classification chart, when we classify the data skilled and unskilled only in two parts, it is simple classification. But when we classify the simple data in also literate, illiterate, and in literate, rural and urban, and in illiterate also rural and urban. इसी तरह अनस्किल्ड डाटा में भी लिटरेट, इलिटरेट, रूरल, अर्बन, एंड लिटरेट में भी, इलिटरेट में भी रूरल और अर्बन. तो व्हेन वी क्लासिफाई the data more than one characteristics, it is called manifold classification or multiple classification of data. एक characteristics के लिए यदि हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, that is simple classification, and manifold characteristics के लिए यदि हम क्लासिफाई करते हैं डाटा, that is called multiple classification of data. You can see from the following graph or table. Now, last, quantitative or numerical classification. Classification is done on the basis of numerical values of the fact. A number of classes are framed keeping in the view the lowest and highest value as well as the range of value in the data is called quantitative or numerical data. For example, you can see annual profit of a small scale firm in the state of UP. Just see how we can classify this data. There are two columns, annual profit and number of firm. एनुअल प्रॉफिट में हमने रेंज दे दी, ये न्यूमेरिकल डाटा है दोनों, एनुअल प्रॉफिट भी न्यूमेरिकल में और नंबर ऑफ फर्म भी न्यूमेरिकल में. तो ये 0 से 1 लाख तक वाली 5 फर्म, 1 लाख से 2 लाख वाली इतनी, 2 से 3 लाख वाली इतनी, 3 से 4 लाख वाली इतनी, 4 से 5 लाख वाली इतनी और 5 लाख से ज़्यादा वाली इतनी. तो when we classify the data on the basis of numerical value of the facts, it is called quantitative or numerical classification of data. Now, after the classification, next topic, concept of variables. First, what is the meaning of variables? A characteristics or a phenomenon which is capable of being measured and change its value over time is called variable. In other words, we can say a variable refers to that quantity which is subject to change and which can be measured by some unit. If we measure the weight of a student of class 11, then the weight of the student will be called variable. किसी भी characteristics के according यदि हम लोग किसी भी characteristics के according यदि हम लोग कोई data collect करते हैं तो that is called variables. There are two type of variables. There are two type of variables. One, discrete variable. What is discrete variable? Discrete variable are those variable that increase in jump or in complete number.
यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट नंबर में है वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कुड बी 1, 2, 3, 10, 15 or 20, but it cannot 1 and 1 by 4, 1 and a half, and 1 and 3 by 4. In other words, discrete variable are expressed in the term of complete number, or one may simple say that value of these variables are in complete number as 1, 2, 3, 4, not in continuous between 1 to 1 and 1 by 4. What is continuous variable? Another one is variable that assume a range of value or increase not in jump but continuously or in fraction are called continuous variable. यानी जब कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, complete with fraction, that is called continuous variable. For example, the height of the boys in a school expressed in 5 feet 1 inch, 5 feet 2 inch, 5 feet 3 inch, and so on. So on. It is called continuous variable. So I think it is clear to you what is the difference between discrete variable and continuous. The main difference, that discrete variable will be in complete value and continuous variable is in a fraction value. It can be a fraction value. It's called continuous variable. And today's last topic is difference between variable and attributes. What is the difference between variable and attribute? Ordinarily, anything that vary change over a time is taken as variable, but not in statistics. Color of your hair may be changed over the time. It is a variable. No, not at all. Why? Because this change cannot be numerical expressed in statistics. Only the change of an object is taken a variable which can be numerically expressed. कहने का मतलब वेरिएबल वो है जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि किसी वैल्यू को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in the year 2005 is found to be 5 feet 6 inch compared to 5 feet 5 inch in the previous year. यानी दोनों सालों के बीच में हमने कंपैरिजन कर लिया। The numerical value, it is called variables. In the qualitative change, like a change in IQ level of a student of class 10th, is called attribute. कहने का मतलब न्यूमेरिकल के अलावा अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। IQ level, a change in the attributes is only qualitative expressed as good, excellent and outstanding. So you can say when we present data in numericals, then it is called variable, and when we present the data in qualitative way, that is called attribute. Thank you very much and have a nice day.